Good evening. Let's start with work-energy theorem. Student, work done by all the forces acting on a body is equal to its change in kinetic energy. Yes or no? How much work we are doing on a body, it is going to decide that how the kinetic energy is going to change. So let's prove that. Students, you know, work done by a net force W is equal to force into displacement. And you know, force is equal to mass into acceleration into displacement. And here, also you know from equation of motion, v square minus u square is equal to 2as. And from there, if I'll find a, then I can write that is v square minus u square by 2s. Yes or no? So w is equal to mas. So in place of as, can I write v square minus u square by 2? So we are writing here m into a, in place of as, we are writing v square minus u square by 2. Correct? That means, student, let a body is moving and here is some velocity u. After some time the velocity is v. Body is getting displaced s. So to give the body, to make the body move in that direction, we are giving some force because the body doesn't want to go. We are giving the force against the motion. Let the body is going, this was the initial velocity, this was the final velocity. Yes or no? And w is equal to, you got mv square minus mu square. So that is equal to half mv square minus half mu square. So that W is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. And W is equal to delta into K, change in kinetic energy. That is only work energy theorem. Kf is the final kinetic energy and Ki is the initial kinetic energy. So you can write here Kf is final kinetic energy, and Ki is initial kinetic energy. Correct? And kf minus ki is change in kinetic energy, and it is only applicable for a single particle, but also for a system, but if the system is rigid system, not discriminated. And when it is applied to a system of two or more particles, then change in kinetic energy the system is equal to the work done, not each particle, one particle. मतलब एक पार्टिकल, एक सिस्टम में अगर कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है बाकी का नहीं हो रहा है तो वी कैन अप्लाई दैट. पूरा सिस्टम का अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर वी कैन अप्लाई दैट वन. एंड इट कैन आल्सो बी अप्लाइड अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, वो देखेंगे हम एंड पे. तो कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये भी वैलिड है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स गो टू, अगर ये थ्योरी के साथ हम कुछ एप्लीकेशंस जान लेते हैं ताकि आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स अटेंड कर सकते हो. गिव हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. Applications of work energy theorem. Give heading applications of work energy theorem. एक एक करके एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं. ठीक है, लेट्स पहला एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, एक बॉडी, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u इज इक्वल टू 0. करेक्ट. एंड एक्वायर्ड ए वेलोसिटी v. कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू ए कांस्टेंट फोर्स f. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स f अप्लाई किया. राइट, मैंने एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स f अप्लाई किया. ठीक है, सो नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करता हूं तो वर्क डन, क्योंकि बहुत केसेस पे आप डायरेक्टली हाफ एम बी स्क्वायर ढूंढते रहते हो या फिर W इज इक्वल टू एफ एस ढूंढते रहते हो. नहीं, ये सारे चीज दिमाग पे रहना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले. So work done is equal to change in kinetic energy, and change in kinetic energy is equal to how much? Initial was 0 because body was at rest, and final is half mv square. From here also you can find. This is the first basic application. Okay. And second, और एक देखते हैं. Students, particle of mass m is thrown vertically off with a speed u. Let एक particle है जिसको मैंने ऊपर की तरफ u स्पीड में थ्रो किया. ठीक है, नेग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन, मतलब एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं. The work done by the gravitational force, right? यहाँ पर हम अगर निकालना चाहते हैं work done by the gravitational force, keep on writing with me.
work done by the gravitational force, work done by the gravitational force as particle reaches maximum height, as particle reaches maximum height, so that will be equal to change in kinetic energy, that is delta k, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial. और आप यहाँ देख सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है क्योंकि बॉडी कम्स टू रेस्ट. So Wj is equal to how much? Simple, we can write half mu square. Correct? Getting or not? And initial, that is minus symbol will be there because kinetic energy is decreasing. Correct? Yes or no? Next, छोटे छोटे केसेस बता देता हूँ ताकि आप पूरा चीज को रिलेट कर सको. स्टूडेंट्स, पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली. मान के चलो कोई एक पार्टिकल ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है. पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली. फॉल्स फ्रीली मतलब u इज इक्वल टू 0. और वो कितने हाइट से फ्री फॉल कर रहा है? h हाइट से मान के चलो. And onto the ground, if u is the velocity with which it reaches the ground, अगर अपने ground को u velocity से टकराया, ठीक है, then work done by air friction, work done by air friction, ऐसा ही कुछ पूछा गया है, work done by air friction, ठीक है. So work done by air friction की अगर बात करें, so wf work done by air friction and also उस पे ऐड कर देते हैं work done by gravitational force, work done by gravitational force. Write with me, work done by air friction and work done by gravitational force. So that is equal to how much? W gravitational plus W frictional, air friction. So that is equal to change in kinetic energy. कितना kinetic energy change हो रहा है? That will only give me. Understood? एकदम इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ पर नोट्स अपडेट कर देना अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो. स्टूडेंट्स, लेट एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लिनेशन थीटा, मतलब इस तरह के एक इंक्लिनेशन है. करेक्ट. ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास m है. स्लाइड्स डाउन, ये फ्रिक्शन लेस है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है एंगल थीटा पे, है कि नहीं, टू द हॉरिजॉन्टल. और ये इंक्लाइंड जो हो रहा है, जिस हाइट से वो इंक्लाइंड कर रहा है, लेट h इज द हाइट ऑफ इंक्लाइन, h इज द हाइट ऑफ इंक्लाइन बोल सकते हैं. कभी कभी क्वेश्चन डायग्राम ना दे के भी थ्योरेटिकली लिख सकता है, तो आप जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक डायग्राम में फ्रेम कर सको, इस तरह की प्रैक्टिस होना चाहिए दिमाग पे. ठीक है. So h is equal to height of the incline. The velocity with which the body reaches the bottom, right? The velocity with which the velocity, right? The velocity with which the velocity with which, right? The velocity with which the body reaches the bottom of incline, with which the body reaches the bottom of incline, which is the bottom of incline is, that is wg is equal to change in kinetic energy. जब यहाँ पर था तो कितना था एनर्जी? इट वाज पोटेंशियल एनर्जी. मतलब जब इस साइड पे था तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. mg इज द वेट और h हाइट से मैं उसको नीचे ला रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, जब नीचे पे वो पहुंच रहा है, when it is reaching at the ground, right? So that kinetic energy how much? Half mv square minus 0. So that mgh is equal to half mv square and v is equal to how much? Root under 2gh. v is equal to root under 2gh. Got it? ये भी हमें ऑलरेडी पता है इसके बारे में. ठीक है. नेक्स्ट और एक एग्जांपल्स देखते हैं. Students, body of mass m starts from rest.
फ्रॉम द टॉप ऑफ द रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से रेस्ट से शुरू होता है, मतलब u इज इक्वल टू 0 और इंक्लिनेशन थीटा है, और ये जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द इंक्लिनेशन इज l, एंड वेलोसिटी v में वो जाके ग्राउंड पे पहुंच रहा है, ठीक है, with which it reaches the bottom of the incline। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके और इसके बीच में, लेट दैट इज म्यू के, ठीक है कि नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। तो उस केसेस पे क्या होगा, डब्ल्यू जी, उससे पहले हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया तो अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन को लेना होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं स्टूडेंट्स, वेट नीचे की तरफ है, ठीक है, mg इज डाउनवर्ड, तो द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, mg sin थीटा ना। If this is theta, then this is going to be theta. This is mg cos theta, gravitational force. This is mg sin theta. तो अगर मैं gravitational force की वर्कडन की बात करूं, so that is w mg is equal to how much, mg sin theta whole into l plus coefficient of friction, you know, work done, displacement, this is s, but what is frictional force, f is equal to mu mg। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या है, n is equal to mg cos theta है ना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस फ्रिक्शन में। तो म्यू के मतलब अगेंस्ट आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ काम कर रहा है और बॉडी नीचे की तरफ, तो इसीलिए 180 डिग्री एंगल, सो दैट इज म्यू के mg cos theta whole into l, that is going to be initial final kinetic energy half mv square, और इनिशियली रेस्ट पे था 0, करेक्ट। इस इक्वेशन को अगर हम पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे तो वेलोसिटी कितना होगा, u स्क्वायर माइनस 2gl, अब सॉल्व करके देख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का रूट अंडर। बस वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट डाल के ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। दिस वाज अनदर केस। और एक दो एप्लीकेशंस बता देता हूँ, सो दैट कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को डील करते वक्त, ठीक है। स्टूडेंट्स मान के चलो एक बुलेट है, ठीक है, देयर इज ए बुलेट, करेक्ट, देयर इज ए बुलेट of mass m moving with velocity v stops in a wooden block, ठीक है, ये जाके स्टॉप हो जाता है किस पे, एक वुडन ब्लॉक के। उस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके हो, जस्ट टू रिकैप्चुलेट फ्यू पॉइंट्स ऑन दैट। सो ये कितने, एक वुडन प्लैंक में जाके जो रुक जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस के बाद, एक डिस्टेंस के बाद, ठीक है, and let f is the resistance offered by the block to the bullet, f is the resistance और रेजिस्टिव फोर्स, किस कुछ भी क्वेश्चन पे दिया जा सकता है, इज द रेजिस्टेंस offered, it is the resistance offered by the block to the bullet, resistance offered by the block to the bullet, ठीक है। so wf is equal to how much, work done by resistive force kinetic final minus kinetic energy initial, W is equal to माइनस रेजिस्टिव फोर्स F इंटू एक्स, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है बुलेट और रेजिस्टिव फोर्स उसको रोक रहा है, 180 डिग्री एंगल, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। सो माइनस एफ एक्स फाइनली 0 हो जाता है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, सो दैट इज F इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर बाई एक्स, गॉट इट। सो दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स, अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स, समझ पे आ रहा है कि नहीं ये सब, ओके, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं, a block of mass m attached to a spring, let and it moves on a horizontal ले लेते हैं, ठीक है, there is a horizontal table, ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, करेक्ट, जो कि एक स्प्रिंग को अटैच हुआ है ना, और जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मैंने बताया था आपको स्प्रिंग कांस्टेंट, यू नो, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, हमेशा यूनिट न्यूटन पर मीटर पे दिया रहता है, टाइप, एंड ये ऑसिलेट करता है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, दूसरा एंड फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है, एंड इट हैज ए स्पीड ऑफ v व्हेन द स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, राइट, it has
a speed v. It has a speed v. It has a speed v when the spring is speed v when the spring is at natural length. So the distance it moves before it comes to instantaneous rest. The distance it moves. The distance it moves on a table the distance it moves on a table before it comes to instantaneous rest. Before it comes to instantaneous rest. That is how much, students? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी भी कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत सारे फोर्सेस दैट इज विल गिव टू टोटल लीड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है स्प्रिंग फोर्स कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर है ना? यस सर नो। एंड डब्ल्यू जी कितना है? एम जी कॉस 90 ना? यस सर नो। दैट इज एम जी कॉस, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 0 क्योंकि वेट तो नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन के दौरान फोर्स भी कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, करेक्ट। सो फाइनल अगर मैं देखूं तो स्प्रिंग फोर्स ओनली रह रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, करेक्ट? यस सर नो? गेटिंग द स्टूडेंट्स? So that is equal to minus half kx square is equal to 0 minus half mv square. So that x is equal to how much? V into root over of m by k. Yes or no? This is the displacement. Just note it, students. चलो लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर देखते हैं इसका, ठीक है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, राइट? द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क एनर्जी थ्योरम the work energy theorem for a variable force. The work energy theorem for a variable force, correct? Students, change in kinetic energy with respect to time dk by dt is equal to how much? D by dt of half mv square ना students? yes sir no? चलो constant mass है half m into v square कर दिया हमने, करेक्ट? half m into v square तो कुछ लिंक नहीं है ना, v square has no link with so half m into इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू वेरिएबल डी टू बी डीवी बाई डी टी, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है कि नहीं? Yes. सो दैट इज, हमने यहाँ पर टू टू कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया? m इंटू डीवी बाई डी टी इंटू वी, करेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना? Yes. and you know force is equal to how much? Mass into acceleration, and that is m into acceleration is dv by dt, correct? So that you got already force into velocity. Can we write m dv by dt is force and velocity tha force into velocity? Getting or not? Yes. So we can also write, m dv by dt, correct? Force is equal to, so finally we got dk by dt. Just see here, we can write rate of change of kinetic energy is nothing but f into v, and v is v may change,
dx by dt. Correct na? So you can also write change in kinetic energy dk is equal to also f dx. Yes or no? Students है ना? है कि नहीं? Yes. Cancel. So if I want to change in kinetic energy dk, dk means kinetic energy initial to kinetic energy final. So that is equal to f dx displacement let x1 initial to x final. Getting or not, students? So change in kinetic energy final. Just a minute. Kinetic energy final minus kinetic energy initial. That is equal to integration of f dx x initial to x final. So that is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial is equal to work done. SAB f dot dx is work done or not? So in this way you can find work energy theorem provide for variable force. Okay, this is also work energy theorem for variable force is also possible for variable force. Correct. This much for today.